So, friends, this is Vasudev Panda. Welcome to the class again. Ethics and Values, 11th class. I think so. ଆଉ ପାଞ୍ଚ ସାତଟି କ୍ଲାସ୍ ପରେ ଆମେ ସାରିଦେବା ବହିଟା ଟ୍ରାଏ କରିବା ସାରିବା ପାଇଁ ଇଫ୍ ପସିବଲ୍। ସୋ ଆଜିର ଚାପ୍ଟର ହେଉଛି ଆମର ଜେଣ୍ଡର ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପିଂ ଏଟ୍ ୱାର୍କ। ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ୱିମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ and their work, invisible work of women ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ତ ଆଜି ପଢ଼ିବା ଜେଣ୍ଡର ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପିଂ। ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପିଂ କହିଲେ ପିଲେ ନର୍ମାଲି ନ୍ୟାରୋ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋଭାବ ବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମାନସିକତା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପିଂ କହିଲେ ନାଇଁ। ତ ଏଠି ଅଛି वी often have deep rooted conspiracy deep rooted ideas about the attributes and capacities of men and women। ସମାଜରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମାନେ ଅବଦାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଣାବଳୀକି ନେଇକି ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ରହିଛି, ମାନସିକତା ରହିଛି କି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମାନେ ୱିକ୍, କାମ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ ଠିକ୍ ସେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ରହିଛି। and these shape our expectation of the roles they need to play in society, and from this mentality, whatever mentality we are possessing, from this mentality it is shaped कहले से जो आम मानसिक भाव में गोटे आकृति तैयारी हो जाए, and our expectation of the roles they need to play in society। समाज रे जो भूमिका से माने निर्वाह करवा कथा मेन एंड वुमेन, आमे से एक्सपेक्टेशन बेस रे ही से भूमिकाटा को माने तैयारी करथाउ, से चित्रटा आमे निजे तैयारी करथाउ। and these are called stereotypes, and these are called, this mentality or mindset of men and women is called stereotypes। We strongly feel that men are suitable for some jobs while women are suitable for some others, and according to our society, our custom and tradition, what our ancestors were telling us, and whatever views were passed to us orally by our forefathers and fathers, from them it is very clear that we feel women as weaker in comparison to men। स्त्री मान को सब दुर्बल बोलिकी कह जाए समाज रे, while women are suitable for some others। आउ आमे भाग कर देछि कि एई काम झाड़ू मारिबा काम केवल स्त्री करिवो, पुरुष माने रोसई काम माने पुरुष मानक पई नुह, एई भलिया जो मेंटालिटी रहिछि एटा को ही आमे स्टेरियोटाइप मेंटालिटी बोली कहउथरे पिले। such preconception still dominates our employment, and these are what preconception माने पूर्व धारणा। एई धारणाटा आगरे थिला, एबे भी अछि, आगुक भी रहिबो, जो दिन पर्यंत आमे ए आम भितर कौन आइडिया परिवर्तन हम ना। still dominates our employment market and decide the work to be assigned to men and women, decide the work that to be put on men and women। many of us have a strong feeling that men are physically stronger than women। yes or no? so आमर भितरु बहुत लोक विश्वास करती कि पुरुष माने महिला मान ठारू फिजिकली दे आर पावरफुल, शारीरिक भाव सक्षम, आउ वुमेन मान को आमे वीकर सेक्शन, मुझे से जिनसटा रिपीट कर सारी। दे आर बेटर एट हैंडलिंग रिस्क एंड दे आर मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन। आउ कौन दैट men can treat the risk in a better way than women। आउ कौन कह जाए जे पुरुष माने जो रिस्क की काम आसे से पुरुष माने से कामटा स्त्री मान अपेक्षा भलसे करि पारंते हैं। and they are more intelligent than women। there is also a misconception that men are more intelligent than women। जदि एई भलिया थांता ताहले तो सबु परीक्षा जेतिके होची, सबु चाकरी सेक्टर जेतिके होची, सबु जगह केवल पिला माने ही पाते, पुरुष माने ही पाते। कहीं यूपीएससी रे टप्पर गोटे झी हो, कहीं जेई मेन रे टप्पर गोटे झी हो, जदि इफ दे आर वीकर and they are more talented, men are more talented than women, if so, which helps them become decision makers। and because man is intelligent than women, as our mentality is, amara manasikata anusare, that's why men are the decision maker in the family, in the society, in the community। देखिथिबो गाँ रे केतबेले कोनोसी जो न्याय निशाप हुए, कोनोसी माने सभा समिति हुए,
से जगह स्त्री मान को डका जाई न थाए जिते कौन से निष्पत्ति नि जाऊ थाए कारण समाज रे आम स्त्री को से भाया स्थान दौना नहीं. So yes, they have better ability to take up responsibility and are more rational compared to women. And also it is considered in our society, आम समाज रे धारणा प्रचलित अच्छी जे means men have better ability to take up responsibility. दायित्व संपन्नतार प्रश्न जिते उठे जे भल भाव परिवार दायित्व केवल किए नहीं पारे जे ए माने पो माने ही नहीं पारे. अमित कुमार परिडा बेटा डोंट मैसेज मी इन द क्लासेस इन बिटवीन द क्लासेस यू आर डिस्ट्रैक्टिंग मी बेटा. ओके I'll make a video on that what you are telling but don't distract me inside the class at least please. जहार क्लास रे से मानकर प्रश्न क्लास चली माने you are to ask only class related question, no other comments, no other questions. I don't like such type of things there inside the class. So as per women in comparison, if we'll compare them, as per women, we assume that they have a concern for others, are better at dealing with the public, display emotional sensitivity to people who surround them, are sacrificing by nature. जमती आम पुरुष विषय पढ़ले बर्तमान स्त्री मान विषय कौन धारणा अच्छी समाज में ताहले स्त्री मान धारणा जदि आम नवा वी assume means think बेटा. So, we assume that they have a concern for others. ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି କୋଉମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ. Then are better at dealing with the public, display emotional sensitivity. They display emotional ସେଥିପାଇଁ ରିସେପସନ୍ କାଉଣ୍ଟରର ଲେଡି ମାନେ ହିଁ ରହନ୍ତି କାରଣ ଆମେ ଭାବୁ ଯେ they can they are better at dealing with the public. ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଭଲସେ ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି. प्रत्येक रिसेप्शन काउंटर देखी बोले झील मैंने बसते नहीं. सो यस पब्लिक डिस्प्ले इमोशनल सेंसिटिविटी एंड दे हैव इमोशनल सेंसिटिविटी. दे आर वेरी इमोशनल इन कंपैरिजन टू men according to our society. I'm not telling this. These are written in your book. That's why I'm telling. Are better at dealing to people, then sensitivity to people who surround them and are sacrificing by nature. त्यागर प्रतीक बोली कह जाए स्त्री को जे त्याग जदि करिवार अछि स्त्री माने ही करिवे पुरुष माने करिवे नहीं. सते कि स्त्री माने कॉन्ट्रैक्ट नहीं कि जन्म नहीं चंती त्याग करिवा पई ओनली दैट द वुमेन विल सैक्रिफाइस व्हाट एवर मैटर इट मे बी. नो मैन विल बी देयर दैट हु विल सैक्रिफाइस देयर. It's Narayan. For your kind information, EVS and ethics are two different subjects. EVS stand for ethics and values. Please try to understand the meaning of ethics and values. And EVS, environmental society, environmental science. So EVS is a part of science, normal science, general science you can say. And ethics and values is a part of moral science. This is the difference between EVS and ethics and values. So women are often judged as physically less capable. Women are often judged as physically less capable, mentally less equipped, and unsuited for challenging jobs. Getting me? So, women are often judged as physically less capable. कौन करा जाए? They are physically less capable in comparison to men. माने शारीरिक भावे एते सक्षम नुहंती जो रूपरे जो रेट्रे पुरुष माने सक्षम. Mentally less equipped and unsuited for challenging jobs and they are mentally weak. मानसिक भाव तंगर मानसिक स्थिति एते स्ट्रांग न थाए पुरुषों भली स्ट्रांग न थाए जा फल रे से माने चैलेंजिंग जॉब करि पारंती नाही. समाज रे विश्वास अछि एक्जेक्टली दिस इज नॉट द फैक्ट challenging jobs and these are only bias and guides us and generate discriminatory practice for women in the employment market. And these are nothing. These are only biased view. माने भिन्न भिन्न मत आउ तुम कहब आमको माने प्रवर्तेला भलिया अंध कला भलिया माने अंधार रखिला भलिया मत सबू ये मत सबूर कौनसी आवश्यकता नहीं कि कौनसी माने सत्य नहीं है. स्त्री जदि स्त्री मेंटाली वीक होता ताहले जो समाज रे जो भलिया अत्याचार होउची
तो से बंची न था संघर्ष करू न था हाउ कैन यू टेल वुमेन आर वीकर देन मेन you know and by this what happens it brings discriminatory practices for women in the employment market, and by this only what happens, it brings discriminatory practices for women in the employment market. ଏହା ଦ୍ୱାରା जो आम रोजगार बाजार रही एम्प्लॉयमेंट मार्केट रही एम्प्लॉयमेंट मार्केट रे गोटे भेदभाव सृष्टि हुए हैं जे नाई स्त्री मान को यही कम कहीं देल तुम से झीटा ताकू यही कम दबा कथा नुह एटा झील मान सुइटेबल जॉब नुह से पुओ को जदि दि जाए पुओ को यही कम कहीं देल पुओ यही कम कर why this discrimination is there? If we are telling, you know, in some extent we are telling that men and women are equal. If they are equal, why there is, you know, discrimination in job sector? Why there is discrimination when religious practices are occurring in our society? Why this you know, stereotype mentality is being prevalent there? The question arises, and we must ask this question to ourselves first of all. In the meantime, society has progressed. Women are being encouraged to enter STEM. So in the meantime, ये माने जो समय विषय आम कथा होचे सोसाइटी हैज प्रोग्रेस्ड आम समाज कौन कर पे उन्नति कर चलछि एनकरेज कौन उत्साहित करा होछि टू एंटर स्टेम STEM यार डेफिनेशन मन रखा पे स्टेम स्टैंड फॉर साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स STEM साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स दिस एक्रोनॉमी this is an acronym मन रखा ए acronym रो अर्थ होची साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स fields and the armed force in our own country एते सब सेक्टर रे गला परे भी वुमेन माने इवन इफ आर्म फोर्स रे भी जॉइन करूचंती ओन कंट्री we find हम पाइबा women doing many top jobs like member of board rooms CO and police services piloting fights and fighter planes आमे जदि वर्तमान समाज रे खोजिबा कि समाज रे स्त्री माने कौन कौन काम करूछंती को जगह रे अछंती यू कैन सी यू नो इन बोर्ड रूम्स जोठी माने बोर्ड कहले बुझी परतबो तमे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मेंबर्स आमे जेमती कहूचे ए माने कोन करि परिबे ए माने सेठी भी थामते तांकर प्रेजेंस अछि पुलिस सर्विस रे अछंती यस अछंती पायलट ही की अछंती यस अछंती फ्लाइट एंड फाइटर प्लेन्स से फ्लाइट रे अछंती फाइटर प्लेन से पायलट से की अछंती then the role of women scientists like M. Banita and Ritu Karital. Heard of the company? Yes, you can say the role of women scientists. The role of women scientists. Mahila Vaigyanik Mananga Visar Jetavale Ame Kohuche. You know, M. Banita, one of the reputed scientists in India. Ritu Karidal, one of the best scientists in India. In the ISRO mission. You know, Chandrayaan 2 re भाग नहीं दुई जन महिला एमाने मन रखा एम बनिता एंड ऋतु खरीदार सो दे आर यू नो पार्ट और दे आर अचीवमेंट्स टुवर्ड्स दैट मिशन कैनॉट बी यू नो डिनाइड कैनॉट बी इग्नोर्ड यस यार दे आर आल्सो वर्किंग एवरीवेयर हाउ कैन यू नो डिस्क्रिमिनेट ऋतु खरीदाल ISRO मिशन चंद्रयान 2 द स्टोरीज ऑफ इंद्रा नूई वी मस्ट हैव नोन इंद्रा नूई इट्स अ नेम यू नो फेमस नेम किरण मजुमदार शाह एंड बिलियनरी एंटरप्रेन्योर्स किरण बेदी किए जानी नहीं के पिले किरण बेदी के विषय समस्त जानी आम इंदिरा नूई के विषय समस्त जानी किरण मजुमदार शाह के विषय भी समस्त जानी देन भावना कांत पायलट ऑफ इंडियन एयरफोर्स ए माने समस्त दे आर रेप्यूटेड लेडी इन देयर ओन सेक्टर व्हाट एवर सेक्टर दे आर वर्किंग दे हैव यू नो डिफरेंट रेपुटेशन सो हाउ कैन यू टेल दैट वुमेन आर वीकर देन मेन एयरफोर्स symbolize the breaking of the stereotypes, and from this example it is very clear that they are able to break the stereotype mentality. But the question arises now, but these comprise a countable few. But if you look at the top jobs where women are, you know, assigned, only a few women will get. केवल किसी हाथ गणती महिला पाइबा आमे पिले एई भलिया जदी सेक्टर सबु एई भलिया टॉप लेवल जॉब सबु जते आमे देखिबा. But this comprise a countable few. The uncountable many are still victims of gender stereotyping at work, and maximum women who are doing jobs
sensationally great, you can say, बहुत बढ़िया काम करछन्ते, still they are facing stereotypy mentality in the job sector. एबे भी से माने भेदभाव र शिकार होचन्ते, एबे भी माने ऑफिस रे से मानन को जो स्टेटस मिलबा कथा से स्टेटस मिलू नहीं. And these uncountable many find themselves in a world where jobs are clearly segregated. Clearly segregated. Getting me? So these uncountable many find themselves in a world where jobs are clearly segregated. And आउ जो women माने रहिले, जो बहुत स्त्री रहिले, जो माने job holding, especially job doing or job holding women, they are facing this segregation. Segregation कहले कौन? भाग भाग करिबा हैं, segregated. Even today, आजी भलिया माने द्वाविंश शताब्दी, even today we find position of nursery teachers, nurses, teaching jobs, front office managers, assistants, attendants, secretary are occupied predominantly by women. स्त्री माने आजिकल स्पेशली को जॉब रे अछंती पिला देख, को जॉब रे सेमान को आमे भाबुचे जे दे आर फिट बोली कि सेही जॉब मान को देखिथिबो. नर्सरी टीचर केबे जेंट्स सही नथिबो, कारण आमर गोटे मेंटालिटी अछि, माइंडसेट अछि जे नर्सरी रे केवल स्त्री माने ही पढ़े पारिबे, माने से कारण मदरली अफेक्शन रहिबो, मदरली अफेक्शन रहिबो. यस, आई वाज आल्सो वंस प्रिंसिपल इन अ प्राइवेट स्कूल and reputed English medium school. This mentality is still, the management is forcing always that go for female teacher inside the nursery classes. This mentality is still there in each and every corner of our society. अच्छी समाज रे अच्छी मो feeling रो कहूँ, मोर experience रो कहूँ पिले. So clearly segregated. Nurses, then teachers, then nurses, nurse गोटे देखी देव, नर्स पोस्ट रे बहुत कम मेल थे. नर्सेस, देन टीचिंग जॉब्स भी वुमेन मान को प्राधान्यता दिया जाउछे. फ्रंट ऑफिस मैनेजर, जेमती मो रिसेप्शन रो कथा टिके आगु कहउतले, रिसेप्शन रे गोटे सुंदरिया झिया नियति आवश्यक रिसेप्शन रे टू अट्रैक्ट द पीपल. व्हाटएवर आई एम टेलिंग द ट्रुथ गाय. Positions of nursery teachers, yes, and then managers and office assistants, even if office assistant, every bus need a female secretary. So office assistant, then attendants, secretary, whatever. Attendants are occupied predominantly by women, and these posts are occupied predominantly by women only. स्त्री मानक द्वारा ही यही सब कार्य संभव. यही काम पाई स्त्री माने फिट बोली कि आम समाज रे आमे माने यही धारणाटा पोषण करू आम पाखे अच्छी. And these jobs are called pink collar jobs. And for your kind information, whatever job I told, मु जो जॉब गुडी को विषय कहली, ए चाकरी मान को कौन कहा जाए, गोटे टर्म अच्छी एम्प्लॉयमेंट सेक्टर रे, या को कहा जाए पिंक कलर जॉब्स. केवल झियो माने करिबा पई उद्दिष्ट थिबा काम बा पिंक कलर जॉब्स बोली कहा जाए. एंड मशीन ऑपरेशंस, नाउ लेट्स सी व्हिच वर्क वुमेन्स आर डिनाइड टू डू. देन मशीन ऑपरेटर्स, captains of ship, members of the armed forces, CEO happens to be men. Look at these jobs. Normally, a rare few, you can say, women exist in this type of jobs. What are those? Machine operator, जंत्रांश परिचालन करुवा व्यक्तित्व. Captains of ship, जहाजर कप्तान. Then members of the armed force, सैन्य बाहिनी रे ऊपर लेवल रे थिबा पुरुषमान. CEO, chief executive officers happen to be men. प्राय जगह पुरुष मानू यही जॉब मान प्राधान्यता मिलता है. एंड देयर जॉब्स आर नोन एज, आम वुमेन मान जॉब को कौन कहते पे, पिंक कलर जॉब्स. एंड दीज जॉब्स आर नोन एज व्हाइट एंड ब्लू कलर जॉब्स. व्हाट वी कॉल व्हाइट एंड ब्लू कलर जॉब्स, which are better paid. And these jobs are better paid in comparison to the job I told earlier about women that normally do. Women are trying to break these gender stereotypes. A good example you can see from some of the women, working women in India. जदि आमे भारतीय सक्सेसफुल महिला मानकर करियर विषय पढ़िबा, आमे जानी परिबा
ଯେ ଦେ ଆର୍ ଟ୍ରାଇଂ ଟୁ ବ୍ରେକ୍ ଦିସ୍ ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍ ମେଣ୍ଟାଲିଟି, ସେମାନେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଷ୍ଟେରିଓଟାଇପ୍ ମେଣ୍ଟାଲିଟିକି ବ୍ରେକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ପିଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଆଜି ତ ସମୟ ଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ପଢ଼ିବା ଆବାଉଟ୍ ଦ ଗ୍ଲାସ୍ ସିଲିଂ, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ସିଲିଂ, how does it happens, what is glass ceiling, what is the definition of glass ceiling. If I'll be there, I must take the class. ମୁଁ ଘରେ ଅଛି, କଲେଜରେ ଅଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କ୍ଲାସ୍ ନେବି ଯଦି ମୋର କିଛି ଅଫିସ୍ କାମ ନାହିଁ। So I hope so you can understand the life of a lecturer and the life of a YouTuber. So a YouTuber normally dedicate 24 hours towards his channel and everything, and a lecturer had a little time only, and whatever time I'm getting, within that time I'm taking the class. Thank you for watching. Thank you for staying with me forever. Bye bye.